morning, students. Today we will see more about acidic strength. Okay, last lecture हमने acidity understand करना start कर लिया था, जिसमें acidic strength is mainly decided by stability of the conjugate base that is getting formed. Okay, when that acid will lose H plus. और इसके कुछ in general examples मैंने आपके साथ करवाए थे. अभी हम क्या करेंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप लेके उसकी एसिडिटी हम अलग से डिस्कस करेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड एंड डिस्कस एसिडिटी ऑफ सेपरेट फंक्शनल. We are discussing acidic strength of alcohols. Okay, तो alcohol as a functional group अगर हम देखने जाए, अगर हम लिटमस या पीएच पेपर से चेक करें अल्कोहल का सॉल्यूशन तो वो न्यूट्रल. Okay, मतलब alcohol is not considered as acidic functional. So what kind of acidity we are talking here? If during the reaction, किसी reaction का, okay, alcohol will say अगर the bond between R and H is breaking and alcohol is donating H plus, okay, then we are talking about that person. It is on its own not going to donate H plus like carboxylic acid and phenol. इसका solution all the time acidic नहीं होता. Okay, will become acidic only during the reaction. Can lose H only during the reaction. And we are just evaluating the possibility for this. Okay. अभी अल्कोहल में H plus यूज करने के बाद ये जो बनता है, this is alkoxide R. And what we have already learned in last lecture is कि जो acidity of alcohol होगी, acidity of this alcohol is directly related to stability of alkoxide. It directly connected to stability of alkoxide. Now look at alkoxide ion. Alkoxide ion is a negative charge ion. So what kind of groups will stabilize a negative charge? EWG. So acidity of alcohol will be directly proportional to EWG on alkoxide ions. More EWG on alkoxide ions, more acid. And inversely proportional to EDG on alkoxide ions. WG on alkoxide ions and EDG on alkoxide ions. Okay, so let us try understanding more. So to begin with, I'm comparing, say, alcohol, ROH, water, HOH, and thioalcohol, RSH. And what are we comparing? Acidic strength. We are trying to understand what is more acidic. Obviously, by checking stability of the conjugate base that is formed. So let us understand acidity of alcohol, water, and alcohol by understanding the stability of the conjugate base. This is alkoxide, conjugate base of alcohol. This is hydroxyl ion, a conjugate base of water, and SH minus, okay, is the conjugate RS. RS minus is the conjugate base that we get, okay, by removing H plus from ion. Now what is more stable? Now stability part. So here if I see
RO minus then is plus I, no doubt यहाँ पे plus I है, plus I हो गया EDG, तो EDG लगाने से acidity अल्कोहल की कम हो जाएगी, stability of alkoxide ion is going to what? So plus I decreases the acidity and stability of alkoxide. So there is plus I, and that is also going to decrease the stability of this. So plus I is decreasing the stability. And what we don't see here is हम यहाँ पे plus I नहीं. So because there is no plus I on OH minus I, OH minus ion is more stable than RO minus and RS. तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर हमको लिखना है कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में व्हाट विल बी ऑन टॉप इज OH minus order. Now let us understand between RO minus and RS. The R part is similar. Okay, negative charge on oxygen and negative charge on sulfur. So I discussed this last lecture with you. Both these belong to same group. Okay, so when it is belonging to same group, we consider not much difference in electronegativity, but what factor dominates is size. इसका मतलब ये है कि जिसका साइज बड़ा होता है उस पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल. So RS minus पे the negative charge is more dispersed. Charge density is low. RO minus पे the negative charge is less dispersed and charge density is less. And then that will make RS minus more stable than RO. What comes here is RS minus and that then what will come here is RO. So ये हो गया stability order. And if this is the stability order, what is the acidity order that I will get? What is going to be most acidic water? And then alcohol. And then alcohol. Okay, this is what is acidity order. Okay, that we are discussing as compared to water and alcohol. Now I will put some more examples here for you. Okay, and we will go on discussing. If at all there are exceptions, that also I will discuss. So I'm putting some more alcohols on the board to understand more about that. Let us understand more. We can compare and understand the acidity, okay, of the conjugate base. Okay, so let us understand
पहले केस में ओके एसिडिटी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ये जो समझ तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया था कि वाटर अल्कोहल से एसिडिक है, ये ऑलरेडी देख लिया, बट इसका हाई अल्कोहल एक्सेप्शन. Okay, so what you have to remember and understand is acidity order. Methanol की acidity थोड़ी सी ज्यादा है water से, but बाकी सारे अल्कोहल, let the R be anything else than CH, बाकी सारे अल्कोहल जो है वो methanol से less acid. This is the acidity. Okay, so methanol is exceptionally more acidic, okay, then water and then alcohol. Okay, अगर pKa कंपेयर करना है तो थोड़ा सा फर्क है, फ्रैक्शनल फर्क, तो ये एक्सेप्शनल है. Other than methanol, all the other alcohols are more acidic, okay, then all the other alcohols are less acidic than water, and only methanol is more acidic than water. This is what is acid. Okay, तो इसमें मिथेनॉल में फंसा जरूर है, ये थियरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा मिथेनॉल एंड वाटर का, ये एक्सेप्शन है जो आपको याद है. तो कभी भी मिथेनॉल और वाटर को हम कंपेयर कर रहे हैं तो मिथेनॉल इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक. Now when I am comparing methanol with other alcohols, तो other alcohols में कार्बन बढ़ रहा है, प्लस आई बढ़ रहा है, and obviously methanol was most acidic. सबसे एसिडिक अल्कोहल मिथेनॉल ही है, और उसमें जो एसिडिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी वाटर से. इसमें एसिडिटी ऑर्डर जो आता है वो दिस इज व्हाट इज एसिडिटी ऑर्डर. That we can write in four steps. What is? In the second case, let us write down the conjugate base and understand the stability of conjugate base first and acidity. But पहला case सबको समझ में आया कि when I am comparing all the alcohols, what is the most acidic alcohol that I have? Okay, क्योंकि obviously मिथेनॉल में CH3 का प्लस आई जो है वो बाकी सारे प्लस आई से obviously क्या है कम. और वाटर के साथ कंपेयर करेंगे तो कोई भी दूसरा अल्कोहल, any other alcohol is always less acidic than water. Only exception that we are having is in case of. Let us solve the next case. I am writing the conjugate base and we will discuss the stability of conjugate base. And from that, we will try to understand the acidity. तो मैं सबसे H निकाल के सबके corresponding conjugate bases, जो conjugate base ज्यादा स्टेबल, जिसपे नेगेटिव चार्ज जो हम दिए जा रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ये NH करना है यहाँ पे. ओके, वो ज्यादा क्या हो जाएगा एसिड. तो इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है? पहले केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, then again in alkane the negative charge is on carbon, then on nitrogen and then on oxygen. So usually we check the electronegativity and we understand
the negative charge is more stable on more electronegative atom. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ओके, तो ये हिसाब से अगर ऑर्डर लगानी जाए तो दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज should be more stable than a negative charge on nitrogen, and that should be more stable than the negative charge on carbon. ये usually order होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट इसमें एक थोड़ा सा फर्क है, ओके, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ with respect to nitrogen and carbon's electronegativity. Okay, we know that oxygen is more electronegative than nitrogen and nitrogen is more electronegative than carbon. But इसमें hybridization जो भी consider करते हैं तो electronegativity order में एक थोड़ा सा फर्क आ जाता है. We'll explain you that and then we will arrange the stability and acidity. So let us understand the electronegativity. Electronegativity order होगी क्या चाहिए? Oxygen has to be more electronegative than nitrogen and then carbon. Okay, this is the expected electronegativity order. Now, when I'm actually checking, what I see is, yes, your oxygen, it can be sp hybridized or sp2 hybridized or sp3 hybridized. कोई भी oxygen का hybridization होने दो. It is undoubtedly more electronegative than nitrogen and then carbon. Undoubtedly more electronegative than nitrogen and then carbon. But when it comes to nitrogen and carbon, थोड़ा सा फर्क. अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp है या नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 तभी वो sp कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. So I repeat, a sp hybridized nitrogen and a sp2 hybridized nitrogen is more electronegative than sp hybridized carbon. तो यहाँ पे मैंने क्या नहीं लिखा है, कौन सा नाइट्रोजन बच गया है, sp3 hybridized. So if nitrogen's hybridization is sp3, its electronegativity is found to be less than a triple bond carbon. Triple bond carbon से sp3 hybridized nitrogen की electronegativity कम है. और इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे ऑब्वियसली आएगा कार्बन. ओके, तो नाइट्रोजन sp3 is more electronegative than carbon sp2 and sp. ओके, तो कार्बन में हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है या एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, that is undoubtedly less electronegative than a nitrogen with sp3 hybridization. तो एक्सेप्शन कहाँ है? एक्सेप्शन ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर सिर्फ पीरियोडिक टेबल से देखें तो ऑल काइंड ऑफ नाइट्रोजन शुड बी अबव कार्बन. इट इज नॉट. The hybridization does make a difference in electronegativity, and that puts a sp hybridized carbon, that makes a sp hybridized carbon more electronegative than sp3 hybridized carbon. Okay, अगर ये electronegativity वाला पार्ट आप सबको समझ में आ गया है तो अभी हम ये कर चुके बेस की ऑर्डर लगा. तो कोई डाउट नहीं कि दोनों ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है आर मोस्ट स्टेबल. अभी उन दोनों में व्हाट इज मोस्ट स्टेबल? इफ आई कंपेयर दिस 2 एंड इफ आई कंपेयर दिस 5, इन 2 एंड 5 में प्लस आई आ रहा है और प्लस आई से 5 की स्टेबिलिटी 2 से क्या हो रही है? डिक्रीज. तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगी in which the 2 is going to be more stable than 5. So both the oxygens are on top. उसके बाद नाइट्रोजन आना चाहिए, but
इसी प्रॉब्लम में मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन लिया है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, ओके। और यहाँ पे जो मेरे पास नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। So when I am comparing a sp3 nitrogen and a sp carbon, a sp carbon goes more electronegative than sp3 nitrogen. That will put 1 up, then 4. Okay, उससे 1 ऊपर आ जाएगा 4 से. Okay, 1 will go up, then 4. Okay, और फिर एंड में क्या आ जाएगा? What will come at the end? At the end, what will come is 3. Okay, so this is what is the stability order, and this is what is the acidity order. Okay, is that clear to you? Is everybody understanding? तो ये प्रॉब्लम का आंसर हो गया। अभी इसका मतलब इन जनरल जो मैंने आपको बताया, मिथेनॉल, वाटर, अल्कोहल, ट्रिपल बॉन्ड, ओके, अमोनिया, अगर इसको सबको मुझे अरेंज करना है तो एक ऑर्डर जो समझ में आती है, मिथेनॉल मोर एसिडिक है वाटर से, है ना? मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक देन द रेस्ट ऑफ ऑल अल्कोहल्स। बाकी सारे अल्कोहल से वाटर जो है वो मोर एसिडिक है। फिर अगर अल्काइन से कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है तो दैट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन अमोनिया, but ammonia is going to be more acidic than any double bond compound and any single bond. तो अल्केन और अल्कीन से अमोनिया ज्यादा एसिडिक है, बट अमोनिया से अल्काइंस आर मोर एसिडिक, एंड ऑन टॉप उसके आगे अल्कोहल है, उसके आगे वाटर है, और सबसे ज्यादा एसिडिक इस सीक्वेंस में हो जाता है मिथेनॉल। तो आप ये ऑर्डर कॉपी करके रखिए। So we discussed little bit about acidity of alcohol. इसको मैंने इंडक्टिव में भी आपको डिस्कस किया था, प्लस आई माइनस आई के एस्पेक्ट से। Now we go ahead and we will understand now the real acidic groups. Let us start understanding about the real acidic group. Okay, that is phenol. So let us understand acidic strength of phenols. So you can copy this, okay, and then I will start explaining you acidic strength of phenol. So I'm clearing this side of the board and let us start understanding acidic strength of phenols.
phenol is a acidic functional group. Okay, इसका मतलब क्या है? If I am having a solution of phenol in water and if I check it with litmus paper, okay, it will show me acidic change. Okay, आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा या पीएच चेक किया तो पीएच पेपर से वो एसिडिक रेंज में उसका पीएच बताएगा. तो वाटर अल्कोहल when we are checking, okay, with pH it's neutral, but when we are checking with phenol, phenol solution is all the time acidic. So meaning is कि phenol में जब भी हम ये इक्विलिब्रियम लिखते हैं, so phenol is in water, a phenolic solution is in equilibrium with phenoxide ion and hydronium ion. ये जो equilibrium है ये always और right होता है और इसके लिए phenol का solution okay हमेशा acidic होता है. Now let us understand that. Okay, ये जो conjugate base है phenol का इसको कहते हैं phenoxide ion. So why this equilibrium is always on right? What makes this equilibrium always stay on right is the stability of phenoxide ion. A phenoxide ion is more resonance stabilized than phenol. And that's the reason this equilibrium is always on right hand side. I will try to show you what is the whole meaning of more resonance stabilized. Phenol और phenoxide दोनों में resonance है. क्या फर्क है? ये मैं समझाने की आपको कोशिश करूँ. तो phenol is your plus M group and it will resonate this. And when I will write the resonating structure, I can go on writing 5 resonating structure. I'm just writing first one, okay, to explain you. So this bond will get a double bond character, and oxygen will be plus. And on phenol, I will resonate the negative charge. And then like this, I can put the negative charge here also and here also. So moral of the story, इसका अगर मुझे हाइड्रेट लिखना है, okay, तो इसके हाइड्रेट में I get a charge separation. What is charge separation? Okay, there is a plus charge on oxygen. यहाँ पे del plus आ जाता है, and there is a minus charge on ring. Okay, ring पे ये 3 कार्बन पे then minus आ जाता है. Okay, this is what is happening in phenol. Let us see what is the point of difference when it becomes phenoxide. So this is the phenoxide ion, ये भी plus M group है, यहाँ पे भी resonance है. But इसके resonance के बाद जो resonating structure मिलता है, उसमें charge separation, only negative charge will resonate in there. तो इसका जो resonance hybrid होगा, I will write this bond with a double bond character and I will put, okay, as a plus M effect, the negative charge on the ring. So this has more charge, this has less charge. This has charge separation, this doesn't have charge separation. And that makes you understand if an oxide ion is more stable than. So this is what is the more stability that we are talking about. Okay. और इसके लिए this is what is making phenol a acidic functional group. Phenol में ये equilibrium हमेशा कहाँ पे होगा? Right पे होगा. अभी देखते हैं acidity of phenol. Obviously, which factor will increase the acidity? How do we understand acidity of phenol? By understanding stability of conjugate base.
by understanding stability of conjugate base. So, acidity of phenol is going to be directly proportional to stability of phenoxide. Any factor that will make a phenoxide ion stable will make phenol corresponding more acid. Obviously, which factor will make phenoxide ion stable? Minus groups, EWG, as phenoxide ion is negatively charged. So, any minus effect is going to make a phenoxide ion more stable. Acidity of phenol will be directly proportional to EWG on phenoxide ion. And acidity of phenol is inversely proportional to EDG on phenoxide ion. Okay, so this is the basic. ये same चीज हो रही है. Okay, acidity में negatively charged group अगर present होगा तो stability बढ़ रही है conjugate base की और acidity बढ़ते जाएगी. Positively positive effect वाला अगर group present होगा, okay, तो क्या हो जाएगा? Acidity कम हो जाएगी और stability भी conjugate base की कम हो जाएगी. तो अभी कुछ simple examples discuss करेंगे and we will understand more about acidity of phenol. है ना? तो इसका moral of the story क्या है? ये जो समझाया इसका कि अगर माइनस m ग्रुप हमने अटैच किया और उसकी मैग्नीट्यूड हम बढ़ा रहे हैं तो that will increase the acidity. and हमने प्लस n ग्रुप अटैच किया है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं so that is going to decrease the acidity of phenol. So I start with some examples. Let us do these examples and understand more about acidity of phenol. And as comparison with other groups, other functional groups as well. पहला example में ले रही हूँ. There is phenol, there is benzyl alcohol. Sorry, not benzyl alcohol. This is cyclohexanol. There is phenol, there is cyclohexanol, and there is water. Water है, alcohol है, और phenol है. हमने water और alcohol में already समझ लिया था कि water is always more acidic than alcohol. Okay, ये हमने समझ लिया था. Except क्या है? methanol. ओके क्योंकि यहाँ पे ये साइक्लोअल्काइड का प्लस आयन होगा. ओके जो फिनॉल में, ओके जो वाटर में नहीं. तो between 2 and 3 what is more stable, what is more acidic? 3 is more acidic than 2. And between 1 and 3 there is no doubt
water and phenol में there is no doubt that phenol is more acidic क्योंकि phenoxide ion जो है वो resonance stabilized है. There is a resonance here which is making this phenoxide ion very stable and this is the acidity of it. तो हमने अल्कोहल और वाटर को ऑलरेडी कंपेयर किया था अभी कुछ समय पहले. अभी मैं उन दोनों को आपको फिनॉल के साथ कंपेयर करके समझा रही हूँ कि any alcohol and phenol when we compare, phenol is undoubtedly more acidic than alcohol and water is undoubtedly more acidic than alcohol except methanol. Is that clear to you? तो ये basic description हमने किया. अभी let us go more and understand more about different kinds of phenol and arrange them in order of their acidity based on what kind of group is attached. अगर plus M group है तो acidity कम होनी चाहिए और अगर minus M group है तो acidity बढ़नी चाहिए. So let us understand more about it. So I'm giving some phenols here and we will arrange them in order of acidity. तो इसमें ग्रुप आइडेंटिफाई करके इनको एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करो.
Yes, I'm putting some groups. We will discuss the acidity order of them. So I'm clearing the right hand side. I hope it's over. फिनॉल की एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई में फिनॉल की एसिडिटी हम डिटेल में करेंगे फिनॉल की एसिडिटी वी डिस्कस ऑल पॉसिबल केसेस ओके तो देखो कोशिश करो आई एम डिस्कसिंग विद यू
ये ऑर्थो बेटा पैरा पे सेम ग्रुप लगता है तो कैसे करना है ये भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, है ना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में वगैरह हमने ये सब डिस्कस किया है, वही टाइप के है। तो सबसे पहले हमको ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप कौन सा है, प्लस है कि माइनस है। Any minus group AWG will try to increase the acidity and any EDG will try to decrease the acidity. उसमें भी सीक्वेंस कैसे होगा, सीक्वेंस यही होगा आपका कि अगर माइनस एम ग्रुप है फिर आएगा माइनस एच, फिर आएगा माइनस आई, फिर जीरो, फिर प्लस आई, फिर प्लस एच और फिर प्लस एम। ये सीक्वेंस होगा एसिडिटी के ऑर्डर के लिए। Is what you have to check, what you have to understand and finish solving this. So karo फटाफट, I will discuss. So let's solve. CH3 ग्रुप क्या है, 10H, हाइपर कंजुगेशन है और इससे एसिडिटी कम हो जाती है। हाइड्रो ग्रुप इज -M और इससे एसिडिटी बढ़ जाती है। COCl is -M और इससे भी एसिडिटी बढ़ जाएगी। क्लोरीन is -I and will increase the acidity. ये zero, neither plus nor minus groups on this phenol. And this के ये lone pair conjugation में है, ये plus है और plus से acidity decrease हो जाती है. Once this is clear, it doesn't take any time to
अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो -m वाले ग्रुप सबसे ऊपर आएंगे। -m में सेकंड है और थर्ड है, नाइट्रो है और एसिड क्लोराइड है। किसका -m ज्यादा है? स्ट्रेंथ नाइट्रो, नाइट्रोजन इज मोर विथड्रॉइंग, तो ऑन टॉप एसिडिटी ऑर्डर में आ जाएगा 2। आई एम राइटिंग इट, ऑन टॉप आ गया 2 और 2 के बाद में -m वाला आ गया 2 और 3 के बाद में देयर इज -i 4, है ना। तो सारे माइनस ग्रुप्स हमने लिख लिया। अभी प्लस और माइनस के बीच में आएगा 0। 0 मतलब जिस रिंग में नीदर प्लस है नॉर माइनस है, दैट इज फिनॉल। तो 4 के बाद में आ जाएगा 5, बेसिक फिनॉल। और 5 के बाद में यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है प्लस और यहाँ पे रेजोनेंस है प्लस, तो दोनों में एसिडिटी कम होगी। किससे ज्यादा कम होगी? रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट। तो इसके बाद में आएगा 1 और उसके बाद में आएगा 6, राइट। सो दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर, ओके, इन केस ऑफ सेकेंड एग्जाम। थर्ड एग्जाम्पल में हमको कैसे सॉल्व करना है? व्हेन यू आर अटैचिंग CH3 ग्रुप। तो CH3 ग्रुप ऑब्वियसली हाइपर कंजुगेशन है प्लस H एट ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पे ये हाइपर कंजुगेशन है और जिससे एसिडिटी कम होगी। मेटा पे हाइपर कंजुगेशन एक्ट नहीं करेगा, मेटा पे हमको इसको प्लस I कंसीडर करना है और जिससे भी एसिडिटी कम होगी। वो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, ये क्रिसॉल्स है। तो क्रिसॉल्स आर ऑलवेज लेस एसिडिक देन फिनॉल। क्रिसॉल फिनॉल से लेस एसिडिक होते हैं, तो इनमें सबसे ऊपर आएगा फिनॉल। अभी क्रिसॉल में मेटाक्रिसॉल विल बी अप देन ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि मेटा में प्लस I है और ऑर्थो और पैरा में प्लस H है। How to differentiate between ortho and para? I will consider now plus I here. अभी इसके लिए हमको प्लस I यूज करना पड़ेगा। जो प्लस I है यहाँ पे वो मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा है, और जिससे पैरा क्या हो जाएगा ऑर्थो से? व्हाट इज मोर एसिडिक? पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। ऑर्थो में ज्यादा एसिडिटी कम हो जाएगी, प्लस I ज्यादा है, पैरा में प्लस I ऑर्थो से कम है ना। तो ऑर्थो और पैरा में व्हाट इज मोर एसिडिक? पैरा, लेस प्लस I, and then what will come? Ortho, right? So this is the answer for Crisols. Then I have given you chlorophenols. Next is chlorophenols. तो क्लोरोफिनॉल में हमको -I कंसीडर करना है और -I आपका ऑर्थो पे ज्यादा होता है। दिस ग्रुप इज वेरी क्लोज टू फिनोलिक ग्रुप, -I यहाँ पे सबसे ज्यादा है। फिर मेटा में -I इंटरमीडिएट रहेगा और पैरा में -I मिनिमम रहेगा और -I से एसिडिटी बढ़ती है। ऑब्वियसली ये तीनों क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल जो है वो फिनॉल से मोर एसिडिक हो जाएंगे, और उसमें भी जहाँ पे क्लोरीन ज्यादा पास है वो सबसे ज्यादा एसिडिक। सो ऑर्थो इज मोस्ट एसिडिक एंड देन इज मेटा, डिस्टेंस से जाना है यहाँ पे, देन इज पैरा एंड देन इज फिनॉल। So this is the acidity order for chloro substituted phenols. ये chloro substituted phenol की acidity order है। When I put fluorine, फ्लोरीन में भी तो -I ही है ना, फ्लोरीन में -I ही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली -I मैक्सिमम आ रहा है।
जिससे एसिडिटी बढ़ रही है, फिर इन बिटवीन माइनस आई यहाँ पे आ जाएगा जिससे एसिडिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे माइनस आई मिनिमम आ जाएगा जिससे भी एसिडिटी बढ़ रही है। तो क्या जो ऑर्डर मैंने क्लोरीन में लिखा है, ऑर्थो ऑन टॉप and then is meta, then is para. Do I have to repeat the same order? क्या फ्लोरोफिनॉल में भी वही ऑर्डर आएगा या कुछ चेंज है? अगर वही ऑर्डर आता तो डिस्कस ही क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे इन जनरल हैलोजन लिख देती, which I haven't written. So there is something happening in fluorophenol. Let us understand that. फ्लोरोफिनॉल में ध्यान दो, ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल पे जो OH का H है और फ्लोरीन है, they are very close to each other, and what they will be involved now is in H bonding, intramolecular hydrogen bonding हो रहा है यहाँ। अभी देखो फिनॉल के केस में अगर ये फिनॉल का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक हो जाता है, ओके, किसी ग्रुप के साथ, इसका मतलब क्या हो गया? इफ दिस इज लिंक्ड टू F, it remains linked to O, क्योंकि फ्लोरीन ने उसको होल्ड करके रखा है। ऑक्सीजन ability to release that H plus decreases, मतलब जिस फिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी एसिडिटी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, H plus can go out, but because this hydrogen bonding is there, it's very difficult for this H plus to get released, and that's the reason जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है फिनॉल के केस में, तो उस केस में इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। It is going to decrease the acidity in case of phenol. तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्थो की एसिडिटी वो इट हैज मोर माइनस आई ज्यादा है, बट माइनस आई से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इफेक्ट हो रहा है ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, और इससे इस फिनॉल की एसिडिटी, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल की एसिडिटी मेटा और पैरा से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट बेसिक फिनॉल जिसमें माइनस आई नहीं है उससे ज्यादा ही रहेगी। तो क्लोरोफिनॉल और फ्लोरोफिनॉल में ये फर्क आ जाएगा। सो व्हाट इज ऑन टॉप? इट्स नॉट ऑर्थो बट मेटा। मेटा के बाद में आएगा पैरा और फिर ऑर्थो। So why ortho is coming below meta and para? Because ortho में intramolecular hydrogen bonding and that is decreasing the acidity of orthofluorophenols. It becomes less than meta and parafluorophenols. So you can check the two orders. Chlorophenol there is a different acidity order and fluorophenol there is a different acidity order. दोनों के एसिडिटी ऑर्डर में फर्क है। Next example is nitro. तो नाइट्रो इज माइनस एम, कोई डाउट नहीं है ना, नाइट्रो माइनस एम है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो माइनस एम से क्या होता है? एसिडिटी बढ़ती है ना। यहाँ पे मेटा पे माइनस एम ने, आई पुट इट एज माइनस आई, और पैरा पे देयर इज माइनस एम। सो नो डाउट कि फिनॉल से तीनों नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक, तो इस एसिडिटी ऑर्डर में सबसे नीचे फिनॉल है। अभी ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम है। ऑर्थो और पैरा में अभी इंडक्टिव से डिफरेंशिएट नहीं करना है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँ।
So there is a O here, है ना, नाइट्रो का. So there is a intramolecular hydrogen bonding between the phenolic H and the oxygen of nitro group, which is at ortho position. और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी कम हो जाती है पैरा नाइट्रोफिनॉल से. तो ऑर्थो और पैरा में what will come up is para. Then what will come is ortho. Okay, so ortho and para में para is up, then is ortho, then is meta. क्योंकि आपका माइनस है ऊपर रहेगा माइनस आई से और इन तीनों के नीचे फाइनली आ जाएगा फिनॉल. So this is the order in case of नाइट्रोफिनॉल्स जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. नेक्स्ट केस में OCH3 ग्रुप लगा दिया है. So OCH3 ग्रुप what is the effect? OCH3 group is plus M group. इit-jee है OCH3. तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा में एज यूजुअल मैं प्लस M लिख देती हूँ जिससे कि एसिडिटी डिक्रीज हो रही है. ऑर्थो और पैरा में प्लस M से एसिडिटी डिक्रीज हो रही है. मेटा में रेजोनेंस एक्ट नहीं करेगा तो मेटा में ये OCH3 हो गया माइनस I और जिससे एसिडिटी बढ़ रही है. ओके, मेटा इज माइनस I जिससे एसिडिटी बढ़ रही है. तो अभी इसको कंपेयर करेंगे फिनॉल के साथ. तो जो माइनस I है दैट विल बी अबव फिनॉल एंड प्लस वाले ग्रुप्स विल बी बिलो. So rough order is meta on top, then is phenol, and then para and ortho. Now again we have to understand the difference between para and ortho. Ortho और para में क्या फर्क है. तो यहाँ पे भी once again same story. There is a intramolecular hydrogen bonding. यहाँ पे भी हमको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है बिटवीन द फिनोलिक H एंड OCH3. तो यहाँ पे भी H बॉन्डिंग है और फिर H बॉन्डिंग से अनडाउटेडली ऑर्थो की एसिडिटी कम हो जाएगी पैरा से. तो इसके ऑर्डर में ऑन टॉप आ गया मेटा. आफ्टर मेटा इज फिनॉल एंड देन इज पैरा, देन इज ऑर्थो. दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर that is there for these phenols. अभी नेक्स्ट केस 7 and 8 दो ही मैंने फिनॉल दिए हैं. नीड टू टीच यू समथिंग हियर. तो पहले केस में पैरा पोजीशन पे CH3 है और CD3 है. अभी हाइपर कंजुगेशन H के साथ होता है, D के साथ बहुत डिफिकल्ट है. CD बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, स्ट्रॉन्ग हो जाता है बॉन्ड. तो जहां पे ड्यूटेरियम है वहां पे इंडक्टिव है, पर जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे पैरा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन है. तो यहाँ पे प्लस H है जिससे एसिडिटी कम हो रही है और यहाँ पे प्लस I है जिससे भी एसिडिटी तो कम ही हो रही है. बट इन कंपैरिजन a plus I will be more acidic than plus H. Now, the only difference between 7 and 8 example, मैंने सिर्फ यही ग्रुप्स की पोजीशन बदल दी. यहाँ पे पैरा पे था, वहां पे मेटा आ गया. इससे क्या स्टॉप हो गया? इससे हाइपर कंजुगेशन स्टॉप हो गया. अभी CH3 के केस में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं रहेगा. तो अगर कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं रहेगा मतलब वहां पे क्या रहेगा? इंडक्टिव रहेगा. तो देयर इज अ इंडक्टिव हियर आल्सो which is plus I, which is decreasing the acidity of phenol, and there is inductive here also. This is also plus I
and this is decreasing the acidity of phenol. क्या फर्क है? T is more EDG, D का प्लस आई ज्यादा है और इसके लिए यहाँ पे प्लस आई ज्यादा हो गया, यहाँ पे प्लस आई कम हो गया, and that means this is more acidic than this. Is that clear to you? So I'll put some more examples in case of phenol. ये अच्छे से कॉपी करो, अच्छे से समझ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. अभी एक दो एक्सेप्शनल केसेस भी करवाती हूँ फिनॉल के, and then we will go ahead with carboxylic acid. Next acidic functional group is carboxylic acid. Let us finish phenol first. So I'm putting a couple of more examples in phenol.
clearing left hand side of the board. I hope this is clear to everybody. Phenols are important. Phenol की acidity अच्छे से करनी है. साइनाइड का जो एसिडिटी ऑर्डर है वो एज यूजुअल जो हम थियरी से डिस्कस करके लिख रहे हैं वैसे ही आ रहा है, बट ये दोनों जो है इनके ऑर्डर्स एक्सेप्शनल है. तो मैं इन दोनों के ऑर्डर दे दूंगी, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लूंगी आपके साथ, एंड देन वी विल गो अहेड एंड अंडरस्टैंड एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो साइनाइड के केस में ऑब्वियसली at ortho position we will have minus I that will increase the acidity, at para also we will, sorry, minus M that will increase the acidity, and at meta minus I that will also increase the acidity. तो ये तीनों फिनॉल से ऊपर है, more acidic than phenol. और ऑर्थो और पैरा में डिफरेंशिएट करने के लिए इंडक्टिव ही लेना है,
और यहाँ पे आपका इंडक्टिव सबसे ज्यादा है, यहाँ पे आपका इंडक्टिव कम है, तो ऑर्डर में सबसे ऊपर आ जाएगा ऑर्थो, और फिर आ जाएगा पैरा, फिर आ जाएगा मेटा, और फिर आ जाएगा फिनोल. दिस इज व्हाट वी विल राइट द एसिडिटी ऑर्डर. यहाँ पे जो एसिडिटी ऑर्डर है वो ये है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि क्यों ये ऑर्डर मैं कह रही हूँ कि एज पर थियरी नहीं आ रहा है. ये भी मैं पार्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इसमें अगर मैं आपको थियरी एक्सप्लेन करने चाहूँ तो मैं कहूँगी NH2 ग्रुप प्लस N ग्रुप है ना. थियरी वाइज दिस इज प्लस N पैरा पे है, प्लस M ऑर्थो पे. तो पैरा और ऑर्थो दोनों फिनॉल के नीचे आने चाहिए, पर देखो पैरा तो नीचे है, ऑर्थो सबसे ऊपर. There is a difference in their pK values. So this I have given you as per pK values. ये pK values से जो ऑर्डर है मैंने आपको दे दी. ओके, मेटा में हमको क्या कंसीडर करना है, मेटा में माइनस आई करना है, तो मेटा फिनॉल के ऊपर है, ये तो ठीक है. बट ये ऑर्थो और पैरा में जो एसिडिटी ऑर्डर में फर्क आ रहा है थियरी से एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल में, इज नॉट एक्सप्लेन्ड on the basis of this theory that we are doing. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा aminophenols. And same is the case in case of hydroxyphenols. Okay, ये catechol है, ये resorcinol है, ये hydroxyphenol है और वो phenol है. तो इनके acidity order जो होती है, resorcinol is most acidic, और फिर हो जाता है catechol, फिर हो जाता है phenol और फिर hydroxy. ये इनकी ऑर्डर. एंड अगेन व्हाई आई से एक्सेप्शन आई एम एक्सप्लेनिंग. यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो प्लस ग्रुप आ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे मैं प्लस लिख दूंगी. एंड अगेन सेम ऑर्थो और पैरा दोनों फिनॉल के नीचे होने चाहिए, फिर ऐसा नहीं. ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है जिससे इसकी एसिडिटी तो कम हो जानी चाहिए, है ना, बट वो भी नहीं लिखता. पैरा इज डाउन एंड ऑर्थो इज अप. सो these are exceptional cases. ये फिनॉल के दो exceptional cases है जो आपको याद रखने. So clear the board fast. I will start with acidic strength या acidity of carboxylic acid. So I'm clearing this side of the board also. I hope ये हो गया है. और अभी हम अगला एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड.
and we will understand acidic strength of carboxylic acid. Carboxylic acid, phenol के जैसा is an acidic functional group. If I am having a solution of carboxylic acid, it will show acidic pH. It will make blue litmus red. Okay, तो आपका जो carboxylic acid है वो acidic functional group है. So let us understand first why this is a acidic functional group. Carboxylic acid जो है पहले aliphatic carboxylic acid डिस्कस करते हैं, बाद में aromatic करेंगे. So when I am making a solution of aliphatic carboxylic acid in water, this equilibrium is on right, and obvious reason यहाँ पे भी वही है. ये जो है ये carboxylate ion है. This is carboxylate ion. And carboxylate ion is more resonance stabilized than carboxylic acid. ये carboxylic acid से more resonance stabilized है. Okay, का मतलब समझते हैं. I show you the resonance in carboxylic acid. So what is the resonance? That is here. This lone pair of electron on oxygen is in conjugation with this double bond. And the next resonating structure for carboxylic acid that we write is this O with a negative charge, a double bond O here, a plus charge and a H. Okay, so this is the resonance that is there in carboxylic acid. Now we will see the same in carboxylate ion. So in carboxylate ion also, the lone pair present on this oxygen is in conjugation. And what you get is this. अभी क्या फर्क है? Okay, इसमें और इसमें. You look at both the resonating structures. यहाँ पे ये जो दोनों resonating structures हैं, they are identical resonating structures. And identical resonating structures are always more stable than non-identical resonating structure. Identical resonating structures are more stable than non-identical resonating structures. So that is what makes a carboxylate ion more resonance stabilized than carboxylic acid. And that is what will put this equilibrium towards right. मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आपको लिख के बताती हूँ. कार्बोक्सिलेट आयन का जिसमें ये जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी और दोनों ऑक्सीजन पे डेल माइनस आएगा. बोथ दीज बॉन्ड्स have equal bond length due to resonance. Both the
resonating structures are equally contributing structures. तो इतने डिस्कशन से क्या समझ में आया? Why carboxylic acid is acidic functional group? Why the equilibrium is on right? Now let us understand when we will compare different acids, different carboxylic acids. Let us understand acidity of different carboxylic acids. Okay, इसको हम अभी understand करते हैं. Let us understand acidity of different carboxylic acid. तो different carboxylic acids के acidic strength समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो अब तक करते आए. Okay, I'm writing it here. So acidic strength will be directly proportional to stability of carboxylate ion. And will be obviously directly proportional to EWG on carboxylate ion and inversely proportional to EDG on carboxylate ion. ये बेसिक जो हम अब तक एसिडिटी में करते आ रहे हैं ये सेम, मतलब कोई भी -m वाला ग्रुप हम लगाते उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, और कोई भी +m वाला ग्रुप हम लगाते उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी. Okay, this is what is -m and +m. Now, as usual, we will start understanding with examples more and more about acidity of carboxylic acid. तो अब तक मैंने water, alcohol, phenol में आपको समझा था. Phenol is more acidic, okay, than water, and water is more acidic than alcohol. अभी मैं phenol और carboxylic acid को compare करूँगी. So let us understand first example, comparing carboxylic acid and phenol. What is more acidic? ये पहला एग्जाम्पल हम करेंगे. और फिर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझेंगे. Benzoic acid and aliphatic carboxylic acid we will understand. And then in this sequence, I will add the formic acid. तो अभी पहला एग्जांपल समझते हैं. फिनॉल इज मोर एसिडिक कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक? आंसर लाइज इन स्टेबिलिटी ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस. तो फिनॉल का कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड है ना, हमने देख लिया था. फिनॉल का कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन होता है. फिनॉल गिव्स फिनॉक्साइड आयन आफ्टर यूजिंग H+, और कार्बोक्सिलिक एसिड will give carboxylate ion after using H+. अभी इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? इस फिनॉक्साइड मोर स्टेबल और कार्बोक्सिलेट मोर स्टेबल? फिनॉक्साइड में भी रेजोनेंस है, कार्बोक्सिलेट में भी रेजोनेंस है, दोनों में रेजोनेंस है. फर्क कहाँ पे है? कार्बोक्सिलेट
का जो रेजोनेंस है दैट इज गिविंग यू आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिनॉक्साइड का जो रेजोनेंस है दैट इज गिविंग यू नॉन आइडेंटिकल resonating structure. What phenoxide gives you is non-identical resonating structure, and what carboxylate gives you is identical resonating structure. So what should be more stable? Carboxylate ion is undoubtedly more stable than phenoxide. I write here, and that's the reason carboxylic acid is more acidic than phenol. Carboxylate ion is more resonance stabilized than phenoxide. Is that clear? चलो next. Carboxylic acid, aliphatic and benzoic acid. तो अभी इसमें क्या देखना है? Carboxylic acid aliphatic है, इसमें तो इसका प्लस I है, इसमें जो इंडक्टिव लगेगा वो प्लस I लगेगा, और प्लस I से एसिडिटी क्या होनी चाहिए? प्लस I इफेक्ट should decrease the acidity. अभी फिनाइल रिंग का क्या लगता है? फिनाइल रिंग का अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो फिनाइल रिंग का माइनस आई लगता है ना? फिनाइल रिंग हैज माइनस आई, आर का प्लस आई है और फिनाइल रिंग का माइनस आई है, और अगर वो माइनस आई हम देखेंगे और इसका प्लस आई कंपेयर करेंगे तो व्हाट शुड बी मोर एसिडिक? A benzoic acid is more acidic as compared to your aliphatic carboxylic acid. ये हो जाता है. तो benzoic goes up as compared to other aliphatic carboxylic acid. यहाँ पे मुझे माइनस I देखना. अभी when it goes to formic, there is an exception. क्या exception है? फॉर्मिक में नो प्लस नो माइनस है, यहाँ पे इन दोनों में हमने ऑलरेडी देख लिया था. तो एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए? फिर सबसे ऊपर आ जाना चाहिए बेंजोइक, उसके बाद में आना चाहिए फॉर्मिक, उसके बाद में आना चाहिए एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. बट ऐसे नहीं होता. ओके, फॉर्मिक इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक. फॉर्मिक एसिड बेंजोइक से ज्यादा एसिडिक है. सो वन इज मोर एसिडिक देन 3 and then 2. And we need to remember this as exception. Okay, तो इसमें आपको हमेशा फॉर्मिक एसिड को ज्यादा एसिडिक कंसीडर करना है बेंजोइक से. फॉर्मिक हैज लेस pKa than benzoic. या benzoic has more pKa than formic. And then यहाँ पे बाकी के कार्बोक्सिलिक एसिड्स आए. ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स किए मैंने एसिडिटी के. विल गो अहेड. तो अब तक हमने देखा कार्बोक्सिलिक मोर एसिडिक हो गया फिनॉल से, फिनॉल मोर एसिडिक हो गया वाटर से, वाटर मोर एसिडिक हो गया अल्कोहल से, है ना? बट अगर मैं मिनरल एसिड से कंपेयर करूं, सल्फोनिक एसिड से कंपेयर करूं, सल्फ्यूरिक एसिड से कंपेयर करूं, तो दैट इज फार फार मोर एसिडिक देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अगर मुझे H2SO4 एक एसिडिटी कह रहे हैं तो एक ऑर्डर समझाना है, तो सबसे ऊपर तो H2SO4 रहेगा. अगर मैं H2SO4 और कार्बोक्सिलिक कंपेयर करूं तो कार्बोक्सिलिक इज very much less acidic than H2SO4, more acidic than phenol.
इन दोनों के बीच में आएगा कार्बोनेट, देन आएगा फिनॉल, फिनॉल के बाद में आएगा वाटर, वाटर के बाद में आएगा अल्कोहल, और मिथेनॉल वाटर के ऊपर रहेगा। ये एक अप्रोक्सीमेट ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया। What next now? I'm giving some examples. Let us understand. और एसिड में मुझे एक इफेक्ट आपको समझाना है जिसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, और इसके वजह से एसिडिटी में क्या फर्क आता है ये हम डिस्कस करेंगे। So that's the main discussion in carboxylic acid pending now. बट उसके पहले एक जनरल एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं करवा दूं। तो इस एग्जांपल में भी वही ऑर्डर है, वही करना है आपको, प्लस है माइनस है अंडरस्टैंड करके ऑर्डर लगानी है। मेक इट फास्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू अ स्पेशल इफेक्ट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। तो इस केस में जो मिथाइल ग्रुप है उसमें प्लस H है,
chlorine is minus I, nitro is minus M, OCH3 is plus M, and cyanide is minus M, and this is 0, pure benzoic acid. तो सबसे ऊपर नंबर डाल देती हूँ, इसकी एसिडिटी समझ लेते हैं. तो सबसे ऊपर माइनस ग्रुप आएंगे और 3 और 5 में नाइट्रो इज मोर विथड्रॉइंग देन साइनाइड. So what is more acidic? Para-nitrobenzoic acid is more acidic than para-cyanobenzoic acid. और उसके बाद में आएगा पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड. तो सारे माइनस वाले ग्रुप हो गए. अभी आएगा बेंजोइक एसिड और प्लस में ये टोलुइक एसिड जो है दैट विल कम अप एंड देन दिस. Right, this is the acidity order. So I think by now everybody is expert in doing the acidity order. As phenol में हमने इतनी जो practice कर ली, तो ये तो आसान है. अभी मैं आपको फिनॉल और इसका डिफरेंस कहाँ पे है ये समझाती हूँ. Okay, what is the difference? Okay, that we have to think and understand when it goes to carboxylic acid. हम डिफरेंस समझते हैं. Okay, so let us start understanding ortho effect. So what is ortho effect? Ortho substituted benzoic acid is always more acidic than the corresponding meta and para substituted benzoic acid, irrespective of what is the group attached. Okay, now let us try to understand क्यों ऐसा होता है. What is the factor that we have to consider here? This is mainly due to SIR effect. ये SIR effect के वजह से होता है. Okay, so I will little bit try to explain you the SIR effect, and I will explain you what makes a ortho substituted acid goes more acidic, okay, then the corresponding para and meta substituted acid. थोड़ा SIR समझ लेते हैं. तो SIR समझाने के लिए I'm just taking a benzoic acid और उसके ऑर्थो पे एक ग्रुप लगा लें. ये ग्रुप प्लस भी हो सकता है, ये ग्रुप माइनस भी हो सकता है, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एनी ग्रुप, बट इट शुड बी एट ऑर्थो पोजीशन. तो हमने एसआईआर में देखा था कि जब भी हमारे पास बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं पास में, तो जो रेजोनेंस है वो इनहिबिट होता है.
there is a steric inhibition of resonance. Resonance gets inhibited due to crowding. What is the resonance here? Resonance में okay, COH is acting as withdrawing group. मतलब बेंजीन रिंग का ये जो फिनाइल रिंग है, okay, phenyl ring in this resonance is acting as plus M. Phenyl is donating and carboxy is accepting. ये resonance है और ये resonance crowding के वजह से रुक जाता है, alter हो जाता है. मैंने steric inhibition of resonance में तो पूरा ब्रेक कभी होता है, पूरा स्टॉप कभी होता है वो बता दिया था. मतलब यहाँ पे भी ग्रुप हो, यहाँ पे भी ग्रुप हो, तो टोटल रेजोनेंस फ्रीज हो गया. बट यहाँ पे ग्रुप नहीं भी है, फिर भी इवन इफ देयर इज वन ग्रुप एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग मेटा एंड पैरा, करस्पॉन्डिंग मेटा एंड when you are comparing ortho पे a group and a para पे group where the resonance is happening without any hindrance at para, where there is a hindrance to resonance at all. मतलब फिनाइल रिंग का जो प्लस एम है, ओके, इज नॉट ऑपरेटिंग, डिफिकल्ट टू ऑपरेट होता है. जितना ज्यादा बड़ा ये ग्रुप होगा उतना उतना वो और डिफिकल्ट टू ऑपरेट हो जाएगा. प्लस एम नहीं ऑपरेट कर रहा है. बट फिनाइल रिंग जो है वो माइनस आई तो है ही है ना, माइनस आई है, सो इंडक्टिव कैन ऑपरेट. ओके, बल्कि ग्रुप होने से, स्टेरिक क्राउडिंग होने से रेजोनेंस अफेक्ट होता है क्योंकि ग्रुप्स आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं और रेजोनेंस के लिए प्लेनारिटी इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन. बट इंडक्टिव के लिए प्लेनारिटी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका इंडक्टिव ऑपरेट होगा. व्हाट काइंड ऑफ इंडक्टिव फिनाइल रिंग हैज? ये जो फिनाइल रिंग है यहाँ पे, इसका इंडक्टिव माइनस आई है, तो फिनाइल का इंडक्टिव माइनस आई है. तो स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से what is not operating is plus m, but what gets operate is minus I. This is operating. तो प्लस m बंद हो गया और माइनस आई एक्टिवेट हो गया. प्लस इफेक्ट कम हो गया और माइनस इफेक्ट बढ़ गया. इससे क्या हो जाता है? इससे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स की एसिडिटी बढ़ जाती है. ओके, जितना बल्कि सब्स्टिट्यूएंट हम ऐड करते जाएंगे उतना ऑर्थो इफेक्ट प्रोनाउंस होते जाएगा. more bulky, more will be the ortho effect. So is this clear? What is ortho effect? Bulkier is the group, more is the ortho effect, more is the acidity. So I'm writing few points here. So, first point that I'm writing is bulkier the group, more is ortho effect, more is acidity. So say for example, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया और मैंने यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया, तो लगेगा नहीं.
आइसोप्रोपाइल लगा देते, ऐसे दिया है तो किसकी एसिडिटी ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा बल्कियर ग्रुप है, या क्लोरीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, so where the acidity is more, where there is iodine, so bulkier the group, more is ortho effect, more is acidity. अभी इस SIR में ऑर्थो इफेक्ट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आता है तो आई एम कंपेयरिंग दिस एंड दिस, ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखिए. I put a OH here. So out of these two, now what is more acidic? Acidic strength is more in case of intramolecular hydrogen bonding than in case of SIR. ये second point आपको समझना है. Acidic strength is more in case of intramolecular H bonding then just SIR. तो इसका मतलब दोनों मैंने ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ली है, दोनों में SIR है, दोनों की एसिडिटी करस्पॉन्डिंग मेटा और पैरा से तो ज्यादा है, दोनों में कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, ये वाला पार्ट. तो इसमें क्या हो जाता है, कार्बोक्सी में जब ये H प्लस लूज हो जाता है ना, इसका ज्योमेट्री तो कुछ ऐसा आएगा, ये O इधर है, ये O माइनस है, तो कार्बोक्सी में H प्लस लूज होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रमोटिंग डोनेशन ऑफ H प्लस है, और इसके वजह से जहां पे एसिड के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वहां पे एसिडिटी बढ़ती है, एंड एग्जैक्टली अपोजिट हमने फिनॉल के केस में देखा, फिनॉल के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फिनॉल की एसिडिटी कम हो गई थी, वही एसिड के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिटी बढ़ गई. Okay, so this is what also you have to understand. So I'm putting some couple of more examples in ortho effect, and we will do some more examples also in understanding the substituted benzoic acids acidity. सब करेंगे. तो अगर ऐसा है, benzoic acid है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, और ये where the acidity is going to be more, the acidity is going to be more here. In तीनों में acidity will be more in case of 2,6-dihydroxy ortho substituted benzoic acid. वहां पे दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके बताती हूँ. यहाँ पे 2,6-dihydroxy ortho substituted benzoic acid का ये कुछ ऐसा रहेगा, OH बॉन्ड है ना, और ये कुछ ऐसा रहेगा, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा. तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और जिससे SIR तो है ही, और जिससे एसिडिटी बढ़ रही है. अभी ये सब कंसीडर करके कुछ एग्जांपल्स करते हैं एसिडिटी के लिए बिफोर वी फिनिश टुडेज लेक्चर. So I'm clearing this side of the board.
I'm taking substituted benzoic acids और ऑर्थो मेटा और पैरा में आपको ऑर्थो इफेक्ट यूज करके एसिडिटी लिखनी है। मतलब कोई भी ऑर्थो एसिड करस्पॉन्डिंग मेटा और पैरा से तो मोर एसिडिक होना ही है। ये सारे केसेस में सबसे ऊपर ऑर्थो एसिड आएगा। फिर मेटा पैरा और बेंजोइक के लिए आप बाकी सारी थियरी जो आपको सिखाई है वो कंसीडर करो। But ortho substituted benzoic acid है, so that has to be above the corresponding meta and para, undoubtedly. Okay, so let us solve, let us understand this, है ना। तो नाइट्रो में मुझे ऑर्थो पे हमेशा कंसीडर करना है ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट से इसकी एसिडिटी बढ़ गई। बेटा पे हो जाएगा -I, पैरा पे हो जाएगा -M और वो 0। ऑब्वियसली ये तीनों बेंजोइक एसिड से ऊपर हो गए, और सबसे ऊपर अनडाउटेडली ऑर्थो इफेक्ट वाला ऑर्थो। फिर -M वाला पैरा आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेटा, और फिर आ जाएगा बेंजोइक एसिड। ये इसकी एसिडिटी ऑर्डर है। OCH3 के केस में भी जो ऑर्थो है तो ग्रुप प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्थो इफेक्ट। सो ऑर्थो इफेक्ट से ये मोर एसिडिक है अनडाउटेडली इसके करस्पॉन्डिंग मेटा और पैरा से। अभी इन तीनों के लिए यहाँ पे -I है जिससे एसिडिटी बढ़ेगी, बट यहाँ पे +M है, और क्योंकि यहाँ पे +M है ये बेंजोइक और मेटा से नीचे आएगा। So in the acidity order, what will be on top is ortho due to ortho effect, and then what will come is meta due to -I. Then what will come is benzoic, and para will be below benzoic as it has
plus M effect. अभी नेक्स्ट केस CH3 है तो CH3 में ऑर्थो पे ऑर्थो इफेक्ट, ये अनडाउटेड ली करना। यहाँ पे क्या आएगा इंडक्टिव जिससे एसिडिटी कम हो रही है, और पैरा पे आएगा हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन दोनों प्लस है, मतलब ये दोनों बेंजोइक से नीचे होंगे, तो सबसे ऊपर आएगा ऑर्थो, उसके बाद में आएगा बेंजोइक। So on top is ortho due to ortho effect, and then is benzoic. Meta and para will be below benzoic. Now in that plus I or plus H में what is less acidic, plus H will go below plus I, है ना? तो मेटा ऊपर आएगा और पैरा नीचे चला जाएगा। क्लोरीन के केस में अगेन ऑर्थो के केस में ऑर्थो इफेक्ट, जिससे एसिडिटी इसकी करस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड से बढ़ गई। और फिर इंडक्टिव कंसीडर करना है। इंडक्टिव में इन दोनों में माइनस आई, मेटा का ज्यादा होगा, मेटा में मोर माइनस आई है, इसमें लेस माइनस आई है, और इसमें नो माइनस आई है। तो यहाँ पे ऑर्डर होगी ऑर्थो ऑन टॉप, देन इज मेटा, देन इज पैरा, एंड देन इज बेंजोइक। So everywhere you will see that ortho substituted acid, whatever is the effect, is undoubtedly put above the corresponding meta and para substituted acid. Corresponding meta और para substituted acid से हमने ortho substituted acid को ऊपर ही लिखा है। Is that clear to you? Okay. So what I've almost finished discussing is the acidity of monocarboxylic acid. थोड़ा सा डिस्कशन अगले लेक्चर हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का भी करेंगे एसिडिटी में, और भी कुछ वेरिएशंस है एसिडिटी में, वो हम कंटिन्यू करके अगले लेक्चर समझ लेंगे. So in my next lecture the acidity part will almost get over, and we can start with basicity from my next lecture. So that's it for today. See you next week.